Good morning, Luanta. So I just had a question regarding the practice. So I've been doing Anapana and awareness of sensations as taught by Goenkaji. And I've been practicing regularly for about 9.5 years, attending retreats, doing 2 hours a day. So I just wanted to know whether I should continue doing this and using these objects as a tool to know the talking mind, or would you suggest some other, what other practice would you suggest for me? Or should I continue doing this and use this as a tool, like you said yesterday, to know the talking mind? मैं 9 साल के ऊपर से प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ गोयनका जी के मार्ग में, जिसमें मुझे आनापाना सती का ध्यान करना होता है और विपासना का सेंसेशन पता करने का ध्यान रहता है, और मैं हर दिन इस प्रैक्टिस को करता हूँ। मगर जैसे आपने कल बोला कि क्या मुझे ये प्रैक्टिसेस कंटिन्यू करना चाहिए, इसको वो टूल्स की तरह यूज करके, वो जो मन जानने वाला मन है उसको जानने के लिए, या फिर मुझे कुछ और प्रैक्टिस करना चाहिए? क्या तरीका सही है? ก็ให้เอาเวทนาเป็นเครื่องล่อไว้เวทนาเป็นเครื่องล่อไว้แล้วก็มีตัวเราไปรู้เวทนาไอ้ตัวเราที่ไปรู้เวทนาเนี่ยมันจะพูดอยู่ตลอดเวลามันจะบ่นงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งบ่นนี้พอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจอาการเราเนี่ยเอาเวทนาเป็นเครื่องล่อไว้เหมือนกับอันนี้เป็นเหยื่อล่อปลาไอ้ตัวเราเนี่ยที่ไปรู้เวทนาเนี่ยมันเป็นปลาเอาเหยื่อมาล่อปลาเนี่ยตัวเราที่ไปรู้เวทนาเป็นปลามันจะพอไปรู้เวทนาแล้วมันจะพูดบ่นมันจะพอใจไม่พอใจหงุดหงิดรำคาญแล้วก็ปล่อยวางตัวเราแล้วจะพ้นทุกข์ So in practice you may use the Vedana as you practice, but as a tool or as a bait to catch fish. So whenever that there is conscious of the Vedana, you are the sense of self conscious of the Vedana, and at the same time the talking mind will talk over that Vedana. Sometimes you get irritated, sometimes you agitate, sometimes you like it. It will mumbling, complaining inside. When you let go of that talking mind, and that's the fear of suffering, and that's the way to practice. Thank you. One last question is, would accessing these jhana stages help speed up the process of knowing the talking mind, the speaking mind? ยิ่งเข้าฌานลึกมันยิ่งไม่เห็นผู้รู้มันต้องเข้าไปให้สุดก่อนแล้วตอนที่มันถอยออกมาก็จะเห็นตอนอยู่ในฌานลึกไม่เห็นหรอก So the deeper you access the jhana, you cannot see the talking mind. The way to practice is access through the deepest of the jhana and then step back to a certain stage and then see the talking mind at that stage. Thank you. เพราะว่าอารมณ์ฌานเนี่ยมันกลบมันมองทำให้มองไม่เห็นไอ้ผู้รู้ผู้พูดผู้พากต้องกิ้งไม้ The reason why we cannot see the talking mind or the monkey mind when we access the deep jhana, because all the jhana phenomena will cover up all the talking mind, and that's why we need to step back a little bit. Thank you. ในการเข้าฌานลึกๆมันเหมือนกับเราใส่เครื่องดำน้ำไอ้สกูบ้าถังออกซิเจนใหญ่ๆสกูบ้าดำน้ำทะเลลึกสกูบ้าดำลงไปลึกๆยิ่งลึกเท่าไหร่อ่ะยิ่งไม่เห็นในตัวเองอ่ะพูดพากเลยไม่เห็นในไอ้มังกี้มายเลยมันจะเห็นแต่อาการที่นิ่งลึกเงียบสงบลงไปเรื่อยๆอันนั้นแหละไม่เห็นไอ้ต้นอยู่ใต้น้ำลึกลงไปฌานอารมณ์ฌานเหมือนกับอยู่ใต้ทะเลลึกลงไปมันจะมองไม่เห็นตัวเองเลยไม่รู้จักตัวเองไม่เห็นตัวเองเลยมันจะเห็นแต่เงียบสงบสงัดอย่างเดียวแต่ตอนมันจะเห็นตอนที่ค่อยๆถอนขึ้นมาจากฌานเหมือนกับใกล้เข้ามาจากผิวน้ำลอยขึ้นมาเหนือผิวใกล้จะพ้นขึ้นมาจนถึงผิวน้ำแล้วอันเนี้ยมันจะเห็นได้ชัดเพราะว่ามันเงียบแล้วพอขึ้นมาเริ่มผิวน้ำมันไม่เงียบแต่นี่มันพูดใหญ่เลยมันเริ่มพูดเริ่มคิดถึงตอนปรุงแต่งพูดบ้างอยู่คนเดียวพูดบ้างอยู่ในใจมันจะเห็นตรงนี้ชัด
เพราะว่ามันไปเงียบไปสงบหมดแล้วพอมันเริ่มพูดมากมันเลยเห็นตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่พูดมากแล้วก็เรื่องมากแล้วก็ทุกข์มากก็คือตัวเราเนี่ยแล้วก็ปล่อยวางตัวเราจิตข้ามตัวเราไปได้จิตนิพพาน If I give analogy, when we access the deep jhana, it's just like we put on the scuba diving and we dive deep down to the under the sea, at the ground of the sea. When we access the deep jhana or we dive down to the sea, we don't see the talking mind because we rather see how deep it is, how quiet it is, how peace it is instead. But when we like float up near to the surface, close to the surface of the water, that is the way, that is the point that we can see that we are the one who have talking all the time. Talking mind working all the time. Talking mind working this and that all the time. And that state, when it float up close to the surface, then we can see the talking mind over there. And when we let go of that talking mind, no attachment to talking mind, there's a point to be free from suffering. वेदना को आप चारे की तरह इस्तेमाल करें, जिससे आपको मछली पकड़नी है। वो मछली है वो जानने वाला। तो जब वेदना होती है तो आपको वो मछली दिखेगी कि कौन जान रहा है उस प्रक्रिया को, कि वो वेदनाएं हो रही हैं। मतलब आप प्रैक्टिस जैसे करते हैं उसको कर सकते हैं, मगर उसको एक चारे की तरह देख के, और असली मछली को पकड़ना है जो कि वो जानने वाला है। तो दूसरा सवाल ये था, तो क्या मैं अगर छाना प्रैक्टिस करता हूँ उससे क्या मेरी कैपेसिटी ये मछली को पकड़ने में और आसान होगी? तो जवाब ये था कि नहीं, उल्टा होगा, क्योंकि जितना आप छाना के अंदर जाते हो उतना ही आपको कुछ पता नहीं चलता है। ऐसा है जैसे आप स्कूबा ड्राइविंग कर रहे हो, सारे ऑक्सीजन लगा के पानी के अंदर आप जाते हो। तो जब आप पूरा पानी के अंदर जाते हो आपको शांति के सिवा और कुछ नहीं मिलता है। मगर हाँ, जब आप शांत से निकलते हो, धीरे धीरे पानी के ऊपर आते हो, फिर जब आप पानी के ऊपर तक पहुंच जाते हो और फिर जैसे वो बोलने वाला मन शुरू होता है। जब आप शांति में थे तो आपको वो चीज सुनाई नहीं दिया, मगर जब आप वापस नॉर्मल कंडीशन में आते हो तो वो मन की आवाज जो हमेशा बक 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 कर रहा है, आपको बहुत साफ आवाज उसकी आएगी। उससे आपको पता चलेगा कि असली में वो जानने वाला हमेशा हर पल कुछ ना कुछ बक रहा है, कुछ ना कुछ बोल रहा है, कंप्लेन कर रहा है, किसी चीज का पसंद या नापसंद कर रहा है। फिर जब आप इससे उभर आओगे तो ऐसा ही आपको प्रैक्टिस करना है कि इसको जानना, फिर उसको ऐसे ही त्याग कर देना। Good morning. From last 4 years, I am regularly practicing Vipassana and attending the retreats, and I have progressed a lot. My life and its surroundings have progressed a lot. Now, moving on the same path of Dhamma towards ultimate truth, is practicing Vipassana sufficient, or I need to go beyond it? If it is, then please let me know. मैं 4 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और उसमें मुझे और अच्छा लग रहा है, मगर अगर असली मन को जानना है या असली सत्य को जानना है, क्या मुझे ये विपස්සना कंटिन्यू करना चाहिए कि कुछ और करना चाहिए? ยังไม่เห็นตัวเองยังไม่รู้จักตัวเองยังไม่เห็นตัวเอง So right now you haven't seen yourself. You don't know yourself yet. अभी आप खुद को नहीं जान रहे हो और अपने आप को देख नहीं पा रहे हो। เข้าใจผิดโดยการพยายามปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเองพยายามเอาตัวเองไปหาสัจธรรมอธิเบตทุส The misunderstanding is that is at the attachment to the sense of self, and that's why you bring the sense of self to seek for nibbana. आपको ये गलत फहमी हो गई है कि एक आप हैं जो उस सत्य को जानने वाला है, जो वो निर्वाण को प्राप्त करने वाला है। ความจริงเนี่ยจะต้องมีสติสมาธิปัญญาสังเกตเห็นว่าความคิดความรู้สึกเป็นตัวเราเนี่ยตัวเองตัวเราเนี่ยที่จะไปหา
นิพพานไปหาอัลติเมททุตหาความจริงอันสูงสุดเนี่ยไอ้ตัวเราต้องเห็นว่าตัวเราเนี่ยเป็นสังขารปรุงแต่งที่เป็นอวิชชาไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นแต่เป็นสังขารปรุงแต่งที่เกิดดับไม่เที่ยงเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาทุกปัจจุบันขณะที่มีความคิดความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นเราเป็นตัวเราของเราเอาตัวเราพยายามดิ้นรนทะยานอย่างไรก็ตามทุกปัจจุบันขณะให้เห็นว่าเป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นสังขารไม่เที่ยงไม่เข้าไปยึดบ้านถือบ้านอันนั้นแหละเป็นหนทางที่จะพบอัลติเมททรูธหรือความจริงอันสูงสุดหรือนิพพาน In any present moment, you have to have mindfulness, concentration, and wisdom in order to see the sense of self, or when a self start to striving to have something, to do something for the Nibbana. But instead, when it start to do that, you need to aware that the self is only anicca, dukkha, anatta, or impermanent, subject to suffer, and selfless. Don't use the sense of self to seek for or to striving for the Nibbana, because it's not real. It's only blinking. It's only a phenomena that arises and cease, and don't follow it. हर एक पल में आपको सति समाधि औरปัญญาका ध्यान करना है और ये जानना है कि जब जब वो मैं उठता है कुछ जानने के लिए कि मुझे मिलेगा निर्वाण, तो उसको जानना है कि असली में वो मैं है ही नहीं, वो बस एक मन का प्रक्रिया है। जैसे वो सोच है जो भाव उठता है और बुझ जाता है, वो हमेशा निरंतर रहने वाला नहीं है, वो अनिच्चा दुक्खं अनात्ता है। फिर उसके थ्रू उस मन के प्रयत्न से आपको वो निर्वाण नहीं मिल सकता है, क्योंकि जब तक वो मैं रहेगा, वो मन रहेगा, तब तक वो निर्वाण नहीं पा सकता है। मगर असली में ये मन क्या है? ये मन संखारा है, जो जैसे ये शरीर है नश्वर है, वैसे ही वो मन भी नश्वर है। Namaste Bhante. I have been practicing Vipassana from almost like 38 years, and I was with Goenka ji. For a few years I could practice along with him. Of course I have gained a lot by this practice, but somewhere there is always the sadness in my thinking or my behavior. So that is one question, and the second question I'll ask later. मैंने 38 ईयर से प्रैक्टिस किया है गोयनका जी के अंदर और बहुत कुछ पाया है इस दौरान, मगर फिर भी मन में एक निराशा रहती है, एक दुख रहता है, तो उसका मुझे क्या करना चाहिए? ที่เป็นที่นี้เพราะว่าไม่เห็นตัวเองไม่รู้จักตัวเองเอาตัวเองไปจับแต่อารมณ์เวทนาจับความรู้สึกเวทนามันก็เลยโดนเวทนาดูดไปแล้วทำให้จมไปในรู้สึกเศร้ามีความทุกข์ความเศร้าหมองเพราะโดนอารมณ์เวทนาดูดไป So right now you don't acknowledge of the self yet. You don't see yourself. You don't know yourself. You don't know the self, and that's why you use the self to watch the Vedana only, and that's why the Vedana is suck you in. You get the self get involved with that mood, with that Vedana, and that's why you have sadness inside. You become one with the sadness or the Vedana. So does that mean that I have to practice on anatta, where I or me is not involved, something like that? ไม่ใช่ต้องเห็นให้มักกี้มายจะไปดูเวทนา It's not like that. You need to see the monkey มั mind. งกี้มายcomplaining mind You need to see. You need to aware of the talking mind, monkey mind, the complaining mind, the moving mind. Not see the Vedana, but see the knower. เขาไปดูผิดตัวดูแต่อาการที่สบายใจไม่สบายใจดูที่ว่างโล่งโปร่งเบาสบายแต่ไม่ได้ปล่อยวางมังกี้มายtalking mind complaining mind What you watch, what you practice is still wrong because you watch only the Vedana
and that's why you don't aware of the knower, the talking mind, the complaining mind at that moment. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने वेदना को ही खुद मान लिया, मतलब आप अपने आप, मतलब वो जानने वाले को अलग देखने के जगह पे खुद ही उस वेदना का पार्ट हो गए, इसलिए आप उस दुख में बह जाते हैं। तो इनका सवाल था, तो क्या मुझे अनंतता पे ध्यान करना चाहिए जहाँ पे कुछ भी नहीं है? तो लोकता का जवाब है कि नहीं, आपको वो देखना है, मतलब वेदना को फोकस करने की जगह पे वो देखना है जो जानने वाला है, और पूरा जो कॉम्प्लेनिंग माइंड है, जो मन हमेशा कुछ ना कुछ बकता रहता है, बोलता रहता है, उसको देखना है और उसका त्याग करना है। Thank you. Another thing is, I have a family, so there is deep down desire that all should practice, and that is not happening. So, wow, that can. एक और सवाल मेरा ये है कि मेरा परिवार है और मेरे मन में एक चाह होती है कि सबको प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए, मगर वो हो ही नहीं रहा है, मतलब ऐसा लोग नहीं कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए इसके बारे में? เป็นเพราะว่ามันหลงไปตามความคิดปรุงแต่งไม่เห็นความคิดปรุงแต่งที่เป็นมักกี้มายท็อกกี้มายสปีกกี้มายหรือคอมเพลนิ่งมาย And this because you still get lost into the talking mind, into the thought, into the sankhara, and that's because you never aware of the talking mind, the monkey mind. और इसकी वजह भी यही है कि आपको अभी वो कंप्लेन करने वाला, बोलने वाला मन नहीं दिख रहा है, इसके लिए आप अपने आप को उस बहाव में, मतलब साथ में हो जाते हो उस सोच के साथ कि वो मैं हूँ। ผู้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เลยที่ผิดพลาดคือไปจับแต่อารมณ์ที่ถูกรู้คือเวทนาคืออารมณ์ใดที่ถูกใจเป็นสุขเวทนาอารมณ์ใดไม่ถูกใจเป็นทุกขเวทนาอารมณ์ใดที่ไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจเป็นอทุกขมสุขเวทนาคนผู้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เนี่ยไม่แต่ท่านเหรอเนี่ยก็ปฏิบัติโดยไปจับแต่อารมณ์ของเวทนาไม่ได้ปล่อยวางผู้ที่ไปรู้เวทนาผู้ที่ไปรู้เวทนานั่นแหละคือจิตปรุงแต่งต้องถ้าปล่อยวางให้ผู้รู้เนี่ยฆ่าผู้รู้จึงจะนิพพาน बहुत सारे लोग ये प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिसेस गलत करते हैं कि वेदना को ध्यान में रखते हैं, वेदना अगर सुखदायी है तो सुख वेदना होता है, दुखदायी है तो दुख वेदना होता है, और अगर उससे कोई फीलिंग नहीं है तो ना दुख ना सुख वाला वेदना होता है। जैसे कि यहाँ पे भंते जी जो बैठे हैं, ये लोग भी उसी भाव में वेदना को ही देख रहे हैं। तो असली में आपको वेदना को नहीं देखना है, मगर उसको जानना है जो वो वेदना को देख रहा है, वो बात समझना है। और जब भी आप इस जानने वाले को पार कर लेते हो, वही ऐसा स्टेज है जहाँ पे आपको ना तो सुख ना तो दुख कुछ भी फील नहीं होता है, उसको निर्वाण कहते हैं। So this is a common mistake of the practitioner, because when we practice, we focus more on the Vedana, whether it's Sukha Vedana happiness, Dukkha Vedana sadness, or negative, or the Atukkhama Sukha Vedana, or the neutral. But we overlook the talking mind, the monkey mind, because we rather focus on Vedana more. And the same as the monk, he catch to the Vedana or catch to the mind object. So he neglect or overlook the mind, talking mind, monkey mind, the comprehending mind. Just like this is the most common mistake of the practitioner. So is that mean that to know the knower, as we discussed yesterday, one has to understand the mind? Through the mind you have to see the knower? I don't understand this. तो इसका मतलब ये है कि हम जानने वाले को जानने के लिए क्या मन से ही जानेंगे, मतलब मन से ही हम जानने वाले को जानने की कोशिश करेंगे। ผู้รู้ก็คือความคิดปรุงแต่งอะไรทุกประกระดาษเนี่ย The knower actually is the thought, is the talking, the sankhara at any present ผู้ที่ไปรู้อะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ความคิดปรุงแต่งมันก็คิดปรุงแต่งไอ้ผู้รู้อะรู้อะไรไม่ว่าแต่ไม่แต่รู้ความคิดปรุงแต่งมันก็คิดปรุงแต่งตลอดเวลาตลอดชีวิตดับไม่ได้
the knower itself, when it know the mind object, it also talking all the time. When it knows something, it เพราะว่า talking ที่มานั่ง over พ and ยายามอธิ over บาย and over. เนี่ยเพราะว่า It's just มัน like ละเอียดมากอะอธิบายตรงเนี้ย जैसे ये सोच, ये जानने वाला है, वो हमेशा कुछ ना कुछ, वो एक सोच ही है, मतलब मन का बनावटी कुछ बनाया हुआ सोच, और जब भी वो किसी चीज को जानता है वो इसी बनावटीपन से जानता है. वो नेचर है मन का कि बनावट करके कुछ भाव उसमें डालना. तो वो हमेशा चलता रहेगा. जब तक आपकी सांस चलेगी तब तक वो मन का बकबक करना और बनावटी करना वो चलता रहेगा. बस उसको पहचानना है. So is it like conscious mind is trying to understand or know the subconscious mind? Something like that. ค่ะตอนนี้พออธิบายไปแกก็เลยถามว่ามันใช่จิตที่มีสติไปรู้จิตที่ไม่มีสติ อันนี้คือสิ่งที่เรากำลังพูดถึงกันหรือเปล่า ผู้รู้อะไรในการตามผู้รู้ต่างๆผู้รู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรู้ความคิดรู้อารมณ์เนี่ยมันจะผู้รู้เนี่ยจะพูดตลอดเวลามันผู้รู้ผู้พูดผู้ปากมันพูดตลอดชีวิตเลยไม่ว่าแม้แต่รู้ความคิดอารมณ์เองแม้แต่รู้ผู้รู้อ่ะไอ้ผู้รู้อันใหม่อ่ะมันก็พูดพลาดตลอดเวลาไอ้เนี่ยพลาดเสี้ยววินาทีเดียวอ่ะไม่เห็นว่าตัวเองอ่ะพูดพลาดอ่ะอันนั้นเนี่ยเท่ากับผิดแล้วไปจมแช่ในอารมณ์แล้ว तो क्या चेतन मन से मुझे अचेतन मन को जानना है? तो जवाब ये है कि नहीं. जब जब तुम्हारे मन में सोच होती है वही वो बकने वाला है. जब आप सोचते हो कि आप जानने जा रहे हो किसी चीज को, कब वो जानने वाला ही वो मन है जो जानने के लिए निकला है किसी चीज को. तो जब जब आपको लगे कि आपने जान लिया है, नहीं, असली में वो जानने वाला एक और हो गया है, बदल गया है, नया जानने वाला आ गया है जो कि नई सोच है. Actually, it's not like the conscious mind or the unconscious mind, but actually when you perceive everything from eyes, ears, nose, tongue, body, even the thought, the mind will speak all the time. This is normal. This is just the 5 aggregates that function as normal. This is a speaking mind that have to speak until you die. But you always believe that the speaking mind that speak now is you. But actually it's just another speaking mind that speak because of you perceive something from your sense spheres. And when it speak now, it will be something that have been known by another speaking mind. That is this moment that you're speaking. So this is just the mind that speak all the time. We just use the meditation object, all of meditation object, even body, Vedana, in order to see the speaking mind that's speaking now. Because the freedom from suffering is come from not attached to speaking mind as a self. It's not like you attach to speaking mind and try to change everything you perceive. Even you try a lot, it will drag you to become one with it, to follow it. The more you try, the more you attach. But you just use it as a hook in order to catch a fish. The fish is the speaking mind, the speaking now. You don't have to find the speaking mind somewhere else. It's just now that you're speaking. It is the speaking that is speaking now, every moment by moment. And this is just the speaking mind that attached to that. This is knowing the speaking mind, knowing the knower, and not attached to the knower. That is why we have to come to practice to see the knower and letting go the knower. วิธีการฝึกเนี่ยถ้าที่มันจะเห็นในผู้รู้ภาคชัดเจนเนี่ย speaking mind talking mind monkey mind หรือ compelling mind เนี่ยมันจะเห็นชัดเจนต้องเป็น present moment มีสติสัมปชัญญะหรือสติสมาธิปัญญาเนี่ยให้เป็นปัจจุบันขณะอยู่กับปัจจุบันขณะ तो सबसे अच्छा प्रैक्टिस ये जानने के लिए कि कब वो बोलने वाला बकने वाला काम कर रहा है वो है कि आपको इस पल में रहना पड़ेगा. जब इस पल में हो तो वो आपको दिखता है क्लियर. जब आप इस सती संपशन्या से इस पल में रहते हो तो वो बकने वाला आपसे अलग होता है जब आप इस पल में रहते हो. And the way to see the speaking mind much more clearer is you have to be in the present moment.
Because if you are in the present moment, you can see the speaking mind that speak all the time. But when you get lost in story, get lost in something outside, get lost in your mind inside, or something attached to something, it's impossible to see the speaking mind that is speaking. So it's why you have to be in the present moment. That is very, very important. And in every minute that you haven't seen the speaking mind, that is already get lost. Thank you. เพื่อจะเป็นเพชรเส้นจำไว้ว่าจะเป็นเพชรเส้นโมเมนต์ได้เป็นเส้นโมเมนต์สติหรือว่าสติสมาธิปัญญาหรือสติกับปัญญาเป็นเพชรเส้นโมเมนต์ได้จะต้องไม่หลงไปใน3กรณีนี้อย่างที่แม่ชีปุ๊กได้พูดไปเมื่อกี้เนี่ยคนหนึ่งไม่หลงส่งจิตออกนอกตาลอยใจลอยเหม่อลอย अगर आपको इस प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मैं शिपुक ने अभी बोला है. पहला, कहीं बाहर की चीजों में खो नहीं जाना. The way to be in the present moment, just there is no 3 cases. The first case is not sending the mind outside or absent-minded, looking on the ceilings. นึกถึงครอบครัวนึกถึงว่าสามีหรือลูกครอบครัวว่าทำไมไม่ได้มาฟังธรรมไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยการทำที่ตัวเองกำลังฟังธรรมอยู่เนี่ยแต่ไปคิดถึงครอบครัวแล้วอันนี้เมื่อลอยไปแล้วหลุดออกไปส่งออกนอกไป अपने पति अपने परिवार के बारे में सोचना कि क्या क्यों उनको ये मौका नहीं मिला कि धर्म सुने, जबकि असली में इस पल में आप धर्म सुन रहे हैं, मगर आपका मन वहां जा रहा है कि क्यों किसी और ने नहीं धर्म सुना. Or thinking about your family member, your loved one. Wow, Longta, he's given very wonderful teaching. Why they not come to listen to Longta? How can I help them? This is sending to my outside. อย่างเนี้ยมีผลทำให้ไม่เป็นปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะใจอ่ะไม่อยู่กับปัจจุบัน तो ऐसे पल में आप इस पल में नहीं रहते हो, मतलब जब आपका मन बाहर निकल गया, इसका मतलब आप अभी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो. Or of this kind of action, that is you sending the mind outside and you can't concentrate with Lord Longta teaching. So that's why you can't understand the Dhamma. เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือมันไม่หลงส่งออกนอกนะไม่หลงส่งจิตออกนอกไม่หลงส่งจิตออกนอกจำไว้ तो प्रेजेंट में रहने का मतलब मन बाहर नहीं गया, मन कहीं और बाहर नहीं सोच रहा है, बस इस बात का ध्यान रखना है. जब मन बाहर की चीजों पे ध्यान दे रहा है, इसका मतलब वो इस पल में नहीं है. So if you stay in the present moment, the first thing you done sending the mind outside. ปัจจุบันตอนนี้คือสนทนาธรรมกัน अभी इस पल में हम लोग धर्म की बात कर रहे हैं, आप और मैं. Because the present moment is Longta teaching you and you listen to Longta and have to contemplate what he is teaching. ปัจจุบันตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะคิดถึงครอบครัว इस पल में आपको अपने परिवार के बारे में सोचना नहीं है. And this time in the session is not the time to think about your family member. กรณีที่สองกรณีที่สอง दूसरा केस, The second case, จะต้องไม่หลงสยบติดอยู่กับอาการภายใน दूसरा आप अंदर अपने मन की क्रियाओं को बंद करने की या कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. not obsessed with the mental action or the mental state inside. เช่นเนี่ยนั่งแล้วก็สยบติดอยู่กับเวทนาภายในอาการว่างโล่งโปร่งเบาสบาย जैसे कि भंते जी जो आगे सामने बैठे हैं, उनका मन अभी अंदर शांति में घुसा हुआ है और उस भाव में उनको आनंद मिल रहा है, इसलिए वो अब अंदर छुपे हुए हैं. And for example, for those tumors, they are the example of the one who is obsessed with the mind inside. Even they're sitting here, they didn't listen to Longta. They're just obsessed with the lightness, the feelings comfortable inside. That is obsessed with the mind inside. The good example, right? อย่างเนี้ยเรียกว่ามันไม่อยู่กับเพชรเส้นโมเมนต์ इसको कहते हैं कि अभी वो इस पल में नहीं है. This kind of action is not in the present, say in the present moment. แม้หูจะฟังอยู่ได้ยินเสียงลูกตาดำ जबकि कान सुन रहा है, मेरी आवाज उन तक पता चल रही है, क्लियर. Even they are hearing your Longta's voice, ๆแต่ไม่รู้เรื่องทำ100% मगर धर्म समझ में नहीं आएगा ऐसे. but actually they didn't contemplate about what Longta teach, so that's why they didn't understand anything. เดี๋ยวพอลูกตาจะขึ้นก็มีกลับแล้วตอนนี้ก็วนกวายแล้วจะรีบหาเรื่องหาโอกาสจะถามส่วนตัวให้ได้ और अब अभी जब मैं निकलूंगा फ्लाइट लेने के लिए, तब सब परेशान हो जाएंगे कि अब मुझे प्राइवेट पूछना है.
Even now, Lota in the class, they didn't contemplate what Lota teaching. But when Lota going to fly back to Thailand, they are very frustrated and try to find the opportunity to ask Lota privately. กรณีที่สาม तीसरा केस, The third case, เอาอะไรมายึดบ้านถือบ้านไว้ในใจไอ้เป็นความทุกข์ความเครียดเป็นกิเลสตัณหาก็ฟังธรรมไม่รู้เรื่องไม่เป็นปัจจุบันธรรม मन में कोई चाह हो जो आपने बांध लिया है खुद को, आसक्ति से आप बन जाते हो, उसको भी नहीं कहते कि आप इस पल में हो. so the third case is keep something or attach something in the mind, and at that moment you get lost and not stay the present moment. เช่นกรณีที่สามเนี่ยยึดบ้านถือบ้านเช่นก่อนมาฟังธรรมนี่เนี่ยน้อยใจสามีหรือภรรยามาแล้วก็มานั่งที่นี่ก็ยังน้อยใจสามีภรรยาอยู่การฟังธรรมก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องไม่เป็นปัจจุบัน कैसे होता है ये तीसरा केस, आसक्ति. जैसे आप आने से पहले आपका किसी नजदीकी इंसान से झगड़ा होके आया है, फिर आप यहाँ पे बैठे हो, बार बार आपका मन उसी के बारे में सोच रहा है और उसके बारे में आप नाराज हो, तो इसको कहते हैं आप इस पल में नहीं हो. और आपको धर्म की बात जो लोटा बता रहे हैं वो मन को नहीं छू पाती है, क्योंकि आपके मन में ऑलरेडी बहुत कुछ है. For example, if someone before come to this session, they have some argument or some conflict with your loved one, and you still feel annoyed with that. And even you are in the session, you keep continue thinking about why they do like that with me, they couldn't do it with me. So you can't contemplate on what Lota teaching because you keep annoyed the one you love. This is attached to something inside. ถ้าไม่หลงไปในทุกปัจจุบันไม่หลงไปในสามกรณีนี้ก็จะเรียกว่าเป็น present moment เป็นปัจจุบันขณะหรือเป็นนิพพานชั่วคราวชั่วคราวชั่วคราว किसी भी पल में जब आप इन तीन चीजों में नहीं रहते हो, इन तीन बातों में उलझ नहीं जाते हो, इसका मतलब आप अभी प्रेजेंट मोमेंट में हो. और जब जब आप प्रेजेंट मोमेंट में हो, इसका मतलब है आपने उस पल का निर्वाण लिया है. तो ऐसे ही छोटा छोटा आपके पल होंगे जिसमें आप निर्वाण रहते हो. If there is no these three action in the mind in that moment, that is stay in the present moment already, and that is temporarily nibbana in that moment by moment already. แต่มีข้อที่ควรระวัง मगर एक बात है जिस पे ध्यान देना पड़ेगा. But have to be careful. การพยายามบังคับจิตใจให้เป็น present moment ปัจจุบันขณะอันนั้นเท่ากับไม่เป็น present moment. कभी भी अगर आप कोशिश कर रहे हो प्रेजेंट मोमेंट में रहने का, वो प्रेजेंट मोमेंट नहीं होता. If you try to control your mind, not have these three actions, that is not in the present moment. เพราะถูกบังคับ क्योंकि उसको आप कंट्रोल कर रहे हो. Because you are controlling the mind. ไม่จิตไม่ยินยอมพร้อมใจ मन आपका सहायक नहीं है इसमें. Because the mind doesn't accept to be at the present moment, but there is the one who try to control.